Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 23717106 and 23421050. Please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers if you are calling us from outside Delhi. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा आनेजा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Key domestic stocks climb more than 1%. Sensex closes above 60,700 level. Nifty regains the 18,000 mark. Gold rises to 50,400 rupees per 10 grams for December contracts at MCX, and Brent crude price declines below $95 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 60,700 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 18,000 के स्तर पर दोबारा पहुंचा। एमसीएक्स पर दिसंबर अनुबंध के सोने की वायदा कीमतें बढ़कर 50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $95 प्रति बैरल के आसपास रहीं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात शेयर बाजार की। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 60,700 जबकि निफ्टी 18,000 के स्तर से ऊपर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.31% की वृद्धि से 787 अंक चढ़कर 60,747 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.27% की तेजी से 225 अंक बढ़कर 18,012 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.24% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुए। The key domestic stock indices today witnessed gains of more than 1%. The domestic stocks rose amid mixed cues from global share markets. The Sensex closed above the 60,700 level, while Nifty settled above the 18,000 mark. The Sensex climbed 787 points, or 1.31%, to finish at 60,747. Nifty also gained 225 points, or 1.27%, to end at 18,012. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged 1.24%, while the small-cap index ended 0.45% up. In the Sensex pack, 27 companies posted gains, while 3 logged losses. Ultratech Cement was the top gainer as it added 4.2%, followed by HDFC, which surged 2.9%. Mahindra & Mahindra and Sun Pharma both climbed 2.7%. HDFC Bank gained 2.6%. On the other hand, Dr. Reddy's Lab declined 0.7%, NTPC fell 0.6%, and IndusInd slipped 0.4%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged gains. Auto sector index climbed 1.6%, while capital goods and tech indices gained 1.5%.
Consumer durables and industrials both ended 1.4% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,779 companies gained while 1,781 fell. Shares of 159 companies remained unchanged. कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने टेलीफोन नंबरों को एक बार फिर से दोहराए दिए देते हैं। टेलीफोन नंबर है 23314444, 23717106 और 23421050। आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। And before we go any further, Harveer, 60,700 Sensex closes at this level. Is this a tremendous confidence booster level for a domestic investor in the country? Yes, the 60,000 and 18,000 both are a psychological level, and definitely it boosts the investors' confidence in the Indian market. So it's a very important actually point for the level for both the indexes, and it shows that we have seen in recent past some high volatility and Sensex went down, but it means that more and more investment is coming back to the market. And the fact that the exports have gone up, especially in the agriculture and the manufacturing sector, that also adds to the what are the other reasons that we see such a fantastic rise, 787 points rise in the Sensex? Actually, more and more global factors are there, and particularly if you see that the indication coming from U.S. economy, and that is the positive sign, and we have seen gain all over the world in the stock markets today, including U.S. market. That there are some indication that maybe in the coming days when the U.S. Fed will take a call about interest rate, so Fed may have some consideration on the softer side, not very hawkish approach, because the number from the U.S. economy are showing that recession fears are going away. More and more wages are going up, employment situation is good, and companies are doing well, but at the same time tech companies did not do well on stocks, and their numbers have gone down, particularly in the markets their stocks have gone down. So maybe that and inflation number, I think the indication is coming that now inflation plateaued, so that there may be a stance, a softened stance, particularly on taking a decision on policy rates. जी हरवीर जी, सेंसेक्स जो है 60,700 और निफ्टी आज 18,000 के स्तर को पार कर गया, दोबारा से छू लिया उसने। एक महीने में देखें तो 3,000 के अंकों की लगभग अभी तक बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है सेंसेक्स में। पिछले एक दो कारोबारी दिनों में हमने देखा कि एफपीआईज जो हैं वो नेट बायर्स बने हैं, और डीआईआईज जो हैं वो अब क्योंकि शेयर की वैल्यूज का एक अच्छे आकर्षक वैल्यूएशंस पे हैं तो उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये आगे बनी रह सकती है? अभी देखिए, इसके पीछे जैसा एक तो मैंने अभी चर्चा किया यूएस की इकोनॉमी की और इंटरेस्ट रेट को लेकर के, दूसरे अब डॉलर इंडेक्स में उस तरीके का बढ़ोतरी के बजाय वो थोड़ा उसमें उस तरह का मजबूती नहीं है। उससे जो एफआईज हैं और एफपीआईज हैं वो जो एक बिक्री कर रहे थे मार्केट्स में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में और हमारे मार्केट में भी नेट सेलर थे वो पिछले 2 महीने में, और 2 दिन में हम देख रहे हैं कि 2 ट्रेडिंग सेशन में वो जो है वो नेट बायर हो गए। तो उनको लगता है कि अभी फिर से मार्केट में एंट्री करने का वक्त है। तो जो आउटफ्लो है फॉरेन कैपिटल का मार्केट से, वो अब इनफ्लो में तब्दील हो रहा है। और ऐसे में बिकॉज जब डीआईज ने और म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने मार्केट को बना के रखा उसको एक तरीके से उसका लेवल, तो उनको लगता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। उनका जब बाइंग लेवल लो है सो दे कैन मेक सम प्रॉफिट। जी, आपने अभी हमारी बात हुई महंगाई को लेकर के और इन्फ्लेशन की जो बात है, जहां तक तो एमपीसी की मीटिंग होने जा रही है 3 तारीख को आरबीआई की, उस मीटिंग से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वीक में है।
एक तो हमारा रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग है और यूएस फेड की मीटिंग है। तो अभी दोनों जगह एक स्थिति है कि इन्फ्लेशन उस दायरे में नहीं है जो सेंट्रल बैंक्स को सेटिस्फाई कर सके, और जो उनकी खासतौर से हम अपने बारे में कहें, जो हमारे सेंट्रल बैंक का जो प्रॉमिस है कि उसको इन्फ्लेशन को 4% ±2 के अंदर में रखना है। अभी हमारा इन्फ्लेशन लेवल ऊपर है और अभी पिछला जो नंबर आया था उसमें थोड़ा बढ़ गया था, और हम लोग खासतौर से जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8% के आसपास है। तो अभी आरबीआई का स्टांस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बजाय ग्रोथ की तरफ ज्यादा झुक जाएगा, वो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली सेंट्रल बैंक के लिए चैलेंज है और ये दोनों फैक्टर ये मार्केट पे अपना असर डालेंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी ए वोलेटाइल मार्केट इन कमिंग डेज। How do we see the dichotomy in the U.S.? On the one hand, there is inflation. On the other hand, we see employment going up and signs of recession kind of waning, as you said. How do you see the paradox? No, actually, inflation, in case of inflation, we have seen some geopolitical disturbances, particularly on the supply side. Earlier, we have seen this COVID. COVID disturbed the supply chain, so and increased the cost, basically. Then at the same time, this Russia-Ukraine conflict also disrupted the supply, particularly in case of commodities. And recently, just as we have seen that Russia has cancelled that agreement of this grain export from Ukraine. So it will have an inflationary impact on food prices in coming days, maybe. Again, so these are the factors, and any economy now you can find out that any economy is not getting affected from these developments, whether our economy or US economy or any other economy. It affects in the globalized economic scenario. We gets affected, any economy gets affected. So this is the situation is happening. You see the prices of energy prices has gone up in a big way, even in US and Europe. Yes. And even US, we have seen the petrol product prices are very high. So that is adding the inflation. So that is the point. But when US economy is stronger, jobs are there, wages are increasing, that is giving a cushion to that. But it is the responsibility of the central bank to control the inflation. How do you see the economy of Europe and China? We've talked about US and India. Yes, Chinese economy, we can see some challenges for Chinese economy because numbers are not very good, and a lot of hard, basically this thing, lockdowns to control COVID in China in last phases of the lockdown, and a lot of production also got affected. And as you know that Chinese news and information doesn't come so freely outside to the outside world, and sometimes economists questions their numbers also. And when central banks were increasing the interest rate, China tried to cut down the interest rate. So, but definitely China is the manufacturing hub for the entire world, and if it gets affected, so it sends strong signal to the world economy. जी, और शेयर बाजार के आज के कारोबार पर अगर हम नजर डालें तो सीमेंट टॉप गेनर रहा है आज, 4.2% की आज इसमें गेन दर्ज हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर को लेकर के आपका क्या आउटलुक है, क्या आप संभावनाएं देखते हैं इसमें? देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काफी खर्च कर रहे हैं, वो पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, हमारे हाईवेज हैं, और अब उनमें सीमेंट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, सीमेंट की खपत बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि सीमेंटेड रोड हम बना रहे हैं बहुत सारी, तो एंड ब्रिजेस हैं, ये सब, तो उस सब में सीमेंट का काफी कंजम्पशन है। एंड रियल एस्टेट सेक्टर भी वो एक तरीके से धीरे धीरे वापसी कर रहा है, हालांकि इंटरेस्ट रेट जो होम लोन वगैरह के ज्यादा हो गए हैं, बट डिस्पाइट दैट वो जो एक ट्रबल बहुत ज्यादा फेज था रियल एस्टेट का, नाउ न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, और जो एस्टेब्लिश्ड ग्रुप्स हैं वो अब इस सेक्टर में आ गए हैं, तो ये एक्टिविटीज बढ़ रही है। तो इस एंड एट द सेम टाइम ये हमारा कोविड के बाद
जो हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटीज है दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल, और काफी हम लोग जो ग्रोथ का नंबर देख रहे हैं डिस्पाइट जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस ने थोड़ा करेक्शन किया है, बट डिस्पाइट दैट विल ग्रो अराउंड 7%. एंड इन इकोनॉमी लाइक इंडिया ऑफ स्केल, if it is growing at 7%, that is a big economic activity. And we are the 5th largest economy at the moment, surpassing UK, and that's something to rejoice. When we talk of the broader market, mid-cap index surged 1.24% and small-cap index ended 0.45% up, says our report. If one were to invest with Sensex at 60,700 level, is this the right time to buy shares, to invest in the stock market, or we wait for it to come down and then invest? Actually, it depends any individual investors what kind of appetite he or she has for investing. Risk appetite? Yes, and what kind of investable surplus investors has. So in that case, my advice is that one has to go thoroughly and should have proper knowledge. He or she can go through mutual fund route because it gives the investor a protection for basically with the informed investment opportunity there through that route. And if someone is going directly, he or she should also not go just about the sector, but also should look about the companies he want to invest basically, because maybe it is not necessary that if one sector is doing well, all the companies will do well, because management and plan and company strategy, a lot of things depends on the performance of a company. Right. We move forward with more news, friends. Well, the Reserve Bank of India will launch the pilot project of Digital Rupee in the wholesale segment tomorrow. Digital Rupee will be used for settlement of secondary market transactions in government securities. In a statement, RBI said that use of e-rupee is expected to make the interbank market more efficient. Settlement in central bank money would reduce transaction costs by preempting the need for settlement guarantee infrastructure or for collateral to mitigate settlement risk. RBI has said that based on the learnings from this pilot, other wholesale transactions and cross-border payments will be the focus of future pilots. 9 banks, namely State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank and HSBC have been identified for participation in the pilot. The first pilot use of digital rupee in the retail segment is planned for launch within a month in select locations in closed user groups comprising customers and merchants. What would you have to say to the use of pilot use of digital rupee? We are of course going digital, the whole country is going digital, and we saw a lot of transactions, digital transactions, huge numbers. We are now actually, as far as digitization is concerned, we are probably a little ahead of the developed economies as well. How do you see the digital rupee happening? Yes, our basically digital transaction number is very high because maybe the size of the transactions are small, and but we are huge volumes number of basically citizen in this country, yes. And now it has become very normal thing to make digital payments, e-rupee, RuPay or all these things. Yes. So and but this new phase is going to start. Maybe initially we are going for a pilot project and basically wholesale, and it will be banks to banks and big organizations. Initially, if I am seeing that, we have to wait for the details how the transactions will take place and what kind of norms and conditions will be there. But as it is in securities and other maybe in future the foreign transactions or these kind of things will also happen, and I think it's a good sign we are going with this new phase of digitization and the use of technology for transactions and currency. Makes life so much simpler. कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ई रुपए का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी समय आरबीआई लागू करने जा रहा है, इससे कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को ओवरऑल हम देखें तो क्या फायदे पहुंचने वाले हैं और इससे आम जो लोग हैं उनको किस तरीके का फायदा आप देखते हैं? देखिए, एक तो आप
पहले लोगों ने इस बात का एक एहसास नहीं था कि हम लोग इस तरीके से छोटी छोटी जगहों पर आप एक बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और आपको पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं है। ना आपको कैश निकालना है, ना आपको कैश जमा करना है, ना आपको इवन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी। सो दैट इज हैपनिंग डिजिटली। ऑल ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग विदाउट यूजिंग द हार्ड करेंसी। सो अभी जो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी ये सिक्योरिटीज में और बड़े नंबर्स में होगा और बैंक्स के बीच में ज्यादातर होगा। तो ये कॉमन मैन तक भी जाहिर सी बात है कि ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए है कि इसमें हम आगे कैसे जाएं। अगर आप देखो, जब लगातार बात हो रही थी बिटकॉइन और इस तरह के करेंसीज की, तो उस वक्त हम लोग इसका सख्त ये थे खिलाफ कि ये इस तरह का करेंसी नहीं आना चाहिए। तो बट साथ में ये भी आया था कि आरबीआई विल लॉन्च इट्स ओन करेंसी, e-currency. So, and I think we are seeing that happening in coming days. On a lighter note, the shopkeepers are saying that the sales of toffees has gone down because everybody is paying cell phone to cell phone digital. So वो एक रुपया की टॉफी मिलती थी वो अब नहीं देनी पड़ती. It's so exact, you know. जी, अब रुख करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान के निकेई में 1.8% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 1.1% की बढ़त में रहे। दूसरी तरफ हांगकांग का हैंग सेंग 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्देशीय कारोबार के दौरान लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.2% की बढ़त में चल रहे थे। फ्रांस का कैक 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। Look at the oil prices now. Well, oil prices today fell more than 1.5% after weaker than expected factory activity data in China. The crude prices declined also amid concerns that China's widening COVID-19 curbs will curtail demand. Brent crude prices slipped below the $95 per barrel mark. In intraday trade, Brent crude was trading at $94.45 per barrel, while WTI crude prices were at $86.40 per barrel. We always say what's good for import is not good for export and vice versa. How do you see when the oil prices are around $95 per barrel? Which way do we see? Actually, still this level is high for us because we import a large quantity and rupee has depreciated in the recent past. Although in the last few days it has appreciated and from the lowest level it has improved due to this dollar index has gone down. So, but despite that, we spent a huge amount of forex on oil imports and above $70-75. Anything is a costly affair for us. It hurts. Yeah. All right. जी, और बात करते हैं कीमती धातुओं की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध के सोने का वायदा मूल्य आज 170 रुपए बढ़कर 50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 180 रुपए की तेजी से 57,660 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्देशीय कारोबार के दौरान सोना मंदी के साथ $1,642.10 प्रति औंस और चांदी $19.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। हरवीर जी, अगर सोने की कीमतों की बात करें तो त्योहारी सीजन भी निकल चुका और देखा हमने यही कि सोने की कीमतें 50,000 के दायरे में ही कारोबार करती दिख रही हैं के आसपास ही। क्या तेजी बिल्कुल गायब है सोने में से? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि जो मेन फेस्टिवल सीजन है वो निकल गया। अभी थोड़ा मैरिजेस का सीजन थोड़ा आएगा, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो उसमें ये दो ओकेजन होता है हमारे लिए। गोल्ड का जो कंज्यूमर की जो बाइंग होती है वो बेसिकली हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की, वो ओकेजन के लिए ही होती है। तो बट मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से गोल्ड पिछले कुछ महीनों से उसमें जो मूवमेंट है, आई डोंट थिंक कोई ये इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल मूवमेंट ठहरा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। But we did have a lot of selling during Dhanteras and Diwali, and India still continues to be the second most larger consumer of gold, which means we have money in our pockets. No, actually, and the gold has sheen. Indian loves gold, and the household quantity of gold is huge. I think one of the highest quantity in the world we have.
हरवीर जी, स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स की बात करें तो आने वाले वक्त में आप क्या उनकी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी जो रबी सीजन अभी शुरू हुआ है वो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि लेट रेन काफी ज्यादा हुई। हालांकि उसका खरीफ की क्रॉप पे कुछ प्रतिकूल असर आया कुछ जगहों पर, लेकिन सॉइल मॉइस्चर अच्छा होने से और उसके चलते एकरेज काफी अच्छा रहेगा इस बार। तो ऐसे में जो सीड कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इवन पेस्टिसाइड कंपनीज हैं और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बिकॉज अगर अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा सीजन रहेगा तो फार्मर्स के पास पैसा बेहतर होगा, सो दे कैन इन्वेस्ट। तो उसमें ये भी है कि इवन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जो है वो भी एक बेहतर फ्यूचर आने वाले दिनों में, कुछ जो रूरल डिमांड है, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रूरल मार्केट, सो उनके लिए थोड़ा बेहतर मार्केट आ सकता है। बट रूरल इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन गुड इवन ड्यूरिंग कोविड, सो वी डू एक्सपेक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी ग्रीन। No, actually, rural economy has some factors of self-sustainability. Like food is available, housing is available, community support is available. So these factors, and it is a natural activity thing. Crop production will happen. It happened at that time also, and we had good crop production around that time. Yeah. Do you think inflation will come down now? After the production of vegetables has gone up? Definitely, it looks like fruit and vegetable prices will come down, because in coming days, even now, number of vegetable and supply to the market will increase heavily now. So that will have a direct impact on prices of vegetables and fruits also. Fruit supply will also increase. और खाद्य तेलों की अगर हम बात करें तो इस समय देश में देखा जाए तो 2,50,00,000 टन खाद्य तेलों की मांग है, जबकि उत्पादन अभी 1 करोड़ टन ही है। हालांकि सरकार के स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि खाद्य तेलों की आयात की निर्भरता हमारी कम हो। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की आजकल बात हो रही है खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कैसा देखते हैं आप इसको, कि क्या ये बहुत मददगार साबित होगी? देखिए, खाद्य तेलों की अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने में हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आए हैं, और ऐसा लगता है कि जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एक नई प्रजाति विकसित करने की, उसके जरिए हम उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि हम लगभग आधे से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरत का, और हमारी जरूरत भी बढ़ रही है। तो ऐसे में एक तो ऑयल पाम मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बट अभी हमें 2-3 साल देखना पड़ेगा उसका प्रोडक्शन आने में। और ये जो नया डेवलपमेंट है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एक किस्म है सरसों की, उसको एक जीएसी की मंजूरी मिली है। अभी टाइम देखते हैं, 2 साल लगेगा मार्केट में किसानों तक बीज पहुंचने में, बट लगता है कि ये डायरेक्शन जिस तरह से है, अगर जो क्लेम्स उसमें कहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो मौजूदा हमारी औसतन चाहे 1.3 टन पर हेक्टेयर की, उससे अगर हम 2 टन या 2.25 टन तक भी ले गए तो वो बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसमें won't our farmers be impacted? I mean, is it necessary? Is it a must that we see the GM mustard will push the growth per acre, or is it going to be trials will tell us that? No. I think now it looks like that as per the information coming out, we will have a lot of trial this season. Coordinated trial by All India coordinated trial by ICR and all. So they will assess the productivity and other implications of that. Of that on human health also. Human health, I think all the concerns are over. It is, we are consuming GM oil. We are importing, in fact, BT cotton gives us cotton seed almost 1.5 million ton we are consuming. So, and they will do human health studies also, impact on bees also. But it looks like that it doesn't have a direct impact, and it is good for farmers to have more productive crop. Right. Well, thank you so much, Harveer ji, for coming to our studio and sharing your views with us. Thank you. And before we wind up, here are the headlines. Key domestic stocks climb more than 1%. Sensex closes above 60,700 level. Nifty regains the 18,000 mark. Gold rises to 50,400 rupees per 10 grams for December contracts at MCX. And Brent crude price declines below $95 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma signing off. We'll see you soon. Till then, namaskar. Namaskar.
आपके साथ